द डिस्कस ऑफ एनटीए अभ्यास चैप्टर वाइज बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द वेक्टर PBR322। PBR322 का इसमें कौन सा फीचर्स वेक्टर्स का फीचर्स नहीं है। तो देखिए, इट हैज़ टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन MPR एंड TET-R। दिस इज ये हैं और ये फिगर नंबर 11.4 जो कि पेज नंबर 199 पे फिगर दिया हुआ है। इट वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर कंस्ट्रक्टेड इन 1997 by Bolivar and Rodriguez. Yes, this is correct. The ampicillin resistance gene has restriction site of BAM H1 and SAL first. This is not a vector of character. ये दोनों जो दिए हुए हैं ये रिस्ट्रिक्शन साइट है। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन साइट है द थर्ड और इको R1 बाम H1 एंड साल फर्स्ट और PVU सेकेंड PST फर्स्ट CLA फर्स्ट है। उसके बाद बात करते हैं हम लास्ट की, ऑप्शन नंबर डी की। द रिस्ट्रिक्शन साइट्स ऑफ PVU सेकेंड इज प्रेजेंट इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड ट्रोपोजीन। फिर क्वेश्चन नंबर सेकेंड, स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर्स हैव बीन designed for availability of oxygen throughout the process. Option number D should be also correct. फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड, fragments of the DNA segments can be separated by gel electrophoresis. It's a very important question according to NCERT. Question number 4, which of the following technique can be used for the introductions of hydrophilic recombinant DNA through the cell membranes of a host cell? Microinjections, gene gun, heat shock methods. Microinjections are used mostly in animals. Gene gun plants and heat shock methods are both, but generally gene gun method are applied only plants. Question number 5, an extra chromosomal self-replicating part of the cell part has proven to be a boon to बायोटेक्नोलॉजी इस प्लाज्मिड वरदान के रूप में कौन साबित हुआ रेप्लिकेशन सेल्फ रेप्लिकेटिंग में, जो कि प्लाज्मिड एज अ वेक्टर यूज होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द सोर्स ऑर्गेनिजम्स दैट प्रोसेस टैग पॉलीमरेज इज thermophilic bacterium and Thermus aquaticus bacteria. Both of these bacteria. Question number 7, the steps involved in the genetically modifying an organism is identifying the DNA with desirable gene. Yes. Maintenance of the introduced DNA in the host. Yes. Introductions of the identified DNA into the host. Yes. All of these. Question number 8, choose the option that is solving for correct sequence of the events occurring in each cycle of the polymerase chain reaction. यानी PCR में कौन सी यूज़ होती है? डीनेचुरेशन, प्राइमर, एनिलिंग, एक्सटेंशंस। इसके लिए हम शॉर्ट यूज भी कर सकते हैं। डे यहाँ पर वाई के जगह हम यूज करते हैं, तो यानी कि डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन। ये 2018 नेट पे पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, which one of the following is used as the vector for cloning genes into higher organisms? Higher organism retrovirus. Question number 10, which one of the following in palindromic base sequence in DNA can be easily cut? eco R1 restriction sites. इसके लिए ये ऑप्शन नंबर थर्ड, इसको हम घटा से पढ़ सकते हैं, यानी GAATTC 5 प्राइम टू 3 प्राइम, फिर 3 प्राइम टू 5 प्राइम CTTAG AAG। Question number 11, the figure below is the diagrammatic representation of E. coli vectors PBR322. Which one of the following options correctly identifies it is certains? MPR TET-R as antibiotic resistance gene. Question number 12, two bacteria found to be very useful in the genetic engineering experiments are E. coli and Agrobacterium.
Question number 13. Identify the wrong statements with respect of restrictions enzymes. More than 230 restriction enzymes have been isolated from 900 strains of bacteria. ये उल्टा दिया हुआ है. More than 900 restricted enzymes have been isolated 230 strains of the bacteria. तो यही wrong होगा. DNA sequence recognized by the restrictions endonuclease is called palindromic sequence. Yes. Hind third was isolated from the Haemophilus influenzae. Yes. Restriction enzymes protect bacteria from the bacteriophage. Yes. Question number 14. The colonies of the recombinant bacteria appear white in contrast to blue colonies non-recombinant bacteria because of option number B, insertional inactivation of beta-galactosidase in the recombinant bacteria. Question number 15. Ideal cloning vector should have restriction site, selectable marker, origin of replication, all of these. Question number 16. Paleontologist unearthed a human skull during excavation. A small fragments of the scarf tissue was still attached to it. Only little DNA could be extracted from it. If the genes of the ancient man need to be analyzed, the best way of getting sufficient amount of DNA from this extract is by subjecting the DNA to polymerase chain reaction. Question number 17. The DNA fragment separated on the agarose gel can be visualized after the staining with ये 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है जो कि डेट में पूछा गया था. एथिडियम ब्रोमाइड स्टेनिंग के लिए, डीएनए की स्टेनिंग के लिए. फिर एग्रोबैक्टीरियम टिमिफेसियंस इज द पॉपुलर in genetic engineering because this bacterium is associated with the roots of all cereal pulses crops. No, not all. A gene incorporated in bacterial chromosomal genome gets automatically transferred to the crop with which of the bacterium is associated. Yes, यानी कि only option number 2 is correct. Question number 19. If the gene of interest is inserted at the BAM-H1 site in PBR322, the recombinant plasmid will be option number D, will not grow in tetracycline containing medium. Question number 20. Choose the correct statement. Presence of more than one recognition site for one enzymes within a vector generated several fragments which will complicate gene cloning. Yes. Question 21. In the isolation of DNA, removal of protein and RNA is carried out of enzymes protease and ribonuclease respectively. Question number 22. The nucleic acid extracted from the animal's liver is isolated and run on the agarose gel. After the staining, it shows following patterns. Option number first is also correctly matched. If the remaining sample is treated with RNAs and loaded in gel, that result would you expect? Option number first is correct. This is both of diagram in direct NCERT. Page number 204, 11.7 नंबर डायग्राम. जो फर्स्ट है एस्टियर टैंक बायोरिएक्टर, जो सेकंड है ये स्पार्क चार्ज्ड टैंक बायोरिएक्टर. क्वेश्चन नंबर 24. इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है. रिस्ट्रिक्शंस enzymes are obtained from bacteria. Yes. Restrictions enzymes are called molecular seizures. Yes. Endonuclease. फिर EcoVar was the first restriction enzymes to be isolated. No. Hind the second. R first. फिर दिस इज रॉन्ग यानी कि सी रॉन्ग है. फिर ऑप्शन नंबर डी,
In 1978, Herbert Smith and Nathan were awarded the Nobel Prize for the discovery of restriction endonuclease enzymes. Yes. Question number 25. The enzymes used to combine two fragments of DNA. Ligase. जब भी दो फ्रेगमेंट्स को जोड़ना होगा डीएनए के तो उसको वहाँ पर हम लाइगेज यूज करते हैं। लाइगेज को मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26. ड्यूरिंग जीन क्लोनिंग जीन टैक्सी इज द term used for plasmid. Question number 27. Which of the following describes the role of selectable marker? Option number D. It is the help for differentiating between transformants and the non-transformants. Question number 28. The basic processes involved in the synthesis of the recombinant DNA molecule is depicted below. The mistakes in this process: cut the restriction endonuclease first, cut the restriction endonuclease second. यहाँ पर सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को यूज किया गया है तो दिस इज रॉन्ग, यानी कि टू डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स आर यूज। यहाँ पर दो डिफरेंट यहाँ फर्स्ट सेकंड दो अलग अलग को यूज किया गया है, इसलिए दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29. आफ्टर completion of the biosynthetic stage in the bioreactors, our product undergoes separation and purification process collectively termed as downstream process. Question number 30. Restrictions endonuclease are enzymes for cut at a specific position within the DNA molecules. Thank you so much for watching this video.